Hi everyone, my name is Deepsa and today we are studying a chemistry topic. Okay, the chemistry topic is carbon and its compounds, and specifically in that we are trying to understand how to identify a homologous series. ना अब ये है क्या सब कुछ, जब बहुत सारे कंपाउंड्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये वो, तो उसको हम एक फैमिली बोलते हैं या उसको एक सीरीज बोलते हैं. ऑल दोज कंपाउंड्स विच हैव वेरी सिमिलर थिंग्स, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, दे ऑल आर कॉल्ड इन अ होमोलोगस सीरीज. अब हमें कुछ कंपाउंड गिवन हो, या तो उसका नाम हो या उसकी स्ट्रक्चर हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एस्टर है कि एसिड है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है. हमें ये पता लगाना है कि जो गिवन कंपाउंड होगा वो क्या है, या फिर नाम दिया होगा और हमें पता करना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है या उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे. वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ फैमिली सीरीज विच इज कॉल्ड एल्डिहाइड. ओके, नाउ इसका फॉर्मूला इज दैट CN, H2N and O. Now what does this mean is if there are 6 carbon atoms, suppose I put 6 here, then how many hydrogen atoms will be there? 12, double होने चाहिए, and one of the O's, and it is basically identified with this part. If you have CHO in the end, किसी भी फॉर्मूला में इफ यू हैव CHO in the end, then it has to be an aldehyde. एक और चीज़ है, इसका सफिक्स इज AL. सफिक्स मतलब जो भी नाम होगा उसके बाद AL लिखा होगा, जैसे इथेनल, प्रोपेनल, हेक्सिनल, like that. So it ends with the AL. Okay, so this is about aldehyde. Now the next family is ketones. Ketones का formula is same as aldehyde. This is called the ketone. Now how do we identify if something has CO in between? This is the functional group here. If CO is there in middle of 2 R's, they could be same, they could be different, R and R dash. तो हमें पता चल जाता है ये कीटोन है, और उसका जनरल फॉर्मूला इज सेम एज एल्डिहाइड, बट उसको बोलते हैं जैसे प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉन, लाइक दैट. सो उसके एंड में ओन आ जाता है, इसकी एल्डिहाइड के एंड में अल आता है. नेक्स्ट फैमिली इज, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज इज एसिड. Now this is not H2SO4 HCl type of acid, it's a organic acid. So इसका is the identifying feature. अगर इस तरह से फॉर्मूला लिखा हुआ है and it has COOH in the end somewhere, then we know that it is an acid. What is the molecular formula? Very similar to this, except that oxygen are 2. So suppose I have 3 carbons, then how many hydrogen atoms will I have? 3 ये है, so this will be 6 and 2 O's. How do I know it? Oic acid. अगर नाम given है तो it will always end in something oic acid. Butanoic acid, ethanoic acid लगा, that ways. So this ends in oic acid. Now final is ester. एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप, एंड बीच में अगेन लाइक एसिड यू हैव COO. COOH नहीं है यहाँ पे, सिर्फ COO है इसके अंदर. इफ यू गेट समथिंग लाइक दिस देन दैट इज एन एस्टर, या फिर इसका जनरल फॉर्मूला इज सेम एज दिस, CnH2nO2. Now we'll take examples and try to identify which
which homologous series it belongs to. Okay, so let's name something. Let's do this. I am giving you a name. Pentanoic acid. Now you have to find all of these 3 more things about it as to what is pentanoic acid. Pent means 5. Pent means 5, and this oic acid from here to here tells us that it is an acid. So this is an acid. Okay. Now RCOOH चाहिए. पेंट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट 5 कार्बन. सबसे पहले 5 कार्बन्स लिख देते हैं. ओके, सो वी हैव रिटन 5. पेंट की वजह से आई हैव रिटन 5 कार्बन्स. ना ओइक एसिड है, एसिड है तो एंड में COOH आना ही पड़ेगा. तो एंड में C तो लिखा हुआ है पहले, C और OH ऐसे लिखा हुआ. नाउ जस्ट सी दिस केयरफुली. एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है. सो दिस इज वन एंड ऑफ दिस. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 4 कार्बन एटम्स. लेट्स सबकी हम वैलेंसी 4 कंप्लीट कर देते हैं. दिस and this. Now can you see that all the valencies are satisfied? This has 4 danda, this has 4 danda, this has 4 danda, and this has 4 danda, and this one had 2 dandas here, 1 here and 1 here. So all carbon atoms have 4 valency each. Now all I have to do is put hydrogens anywhere we find an empty valency. So this is completely what is pentanoic acid. You can see this and be very sure that this has to be an oic acid, an acid. Now condensed formula. Condensed में क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को लिखते हैं. कंडेंस मतलब छोटा करना. अब इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा? तो वी कैन से ये एक पार्ट हो गया CH3, CH3, देन ये नेक्स्ट पार्ट हो गया विच इज CH2, एंड ये एक पार्ट हो गया CH2, ये एक पार्ट हो गया CH2, and then we have COOH. So this becomes the condensed formula for this example. Now we also have to write molecular formula. Molecular formula is like this. We should get C some number, H some number, and O2. So let's see. We know that pentanoic will have 5. Okay, C5. Then how many hydrogens should we have? 10. And how many oxygen should be there? 2. Now let's check in the diagram, is it giving the same formula or no? Carbon 5. Let's count the hydrogens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So hydrogens are also perfect. 5 carbon atoms here, 10 hydrogen atoms, and this and this 2 oxygen atoms. So our molecular formula is also right. Now you can also write as, this again doesn't show, इससे पता नहीं चलता कि एसिड है. तो व्हाट वी डू इज सिर्फ एक कार्बन वाला COOH वाला हम अलग कर देते हैं, बाकी सब R के फॉर्म में, अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिख देते हैं. सो इट विल बी C4H9. दिस इज द ब्यूटाइल ग्रुप, and then you have one more COOH. Now after you see this, you can make out that it is an acid. Okay, now we'll do few more questions like this, and it will be solved. Oh, I rubbed the headings also.
Anyways, let's do ethanol. Okay, let's do ethanol. What was this? Condensed. And this was structure. Okay, now let's take the example as ethanol. Okay, no, not ethanol. They have given us a structure. They have given us a structure which has C, then it has an O here and an H here, and इसकी चारों valencies पर 3 valencies पर हाइड्रोजन नंबर. So this is the structure given which you have to identify. ये क्या है? सबसे पहले तो 2 कार्बन एटम्स है, नाम तो ढूंढ लें इसका. सबसे पहले 2 कार्बन एटम्स हैं, which means it is eth. Now can you notice something? One of the carbon atoms has, this is CHO. This is CH and a double bonded O. Now when you have such a thing, what is it? CHO जब नज़र आ जाता है, it's an aldehyde. So for sure this is an aldehyde. eth लगा चुके हो, ethanol. So it becomes ethanol. So the name of this compound which we are seeing is ethanol. Okay, now condensed formula is very simple. You take this part which is CH3 and you take this part which is CHO. Still it tells us कि ये aldehyde है. Now let's verify the molecular formula. अगर C 2 हैं, 2 ही दिख रहे हैं ना C, so C2, how many should hydrogen be there? According to this, it should be 2N होने चाहिए ना, तो हाइड्रोजन होने चाहिए 4 और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए. Let's verify it from the diagram. 2 carbons, 1, 2, 3, 4 hydrogens verified and 1 oxygen verified. Hence, it is fine. The structure, name, everything confirms that this is a aldehyde and ethanol is the name of this aldehyde. Okay, next we'll go to something which is discuss. Okay, C4H9H10. No, let's check this. Let's not do this. So I am doing CH3, CH2, CH2 and CO, CH3. So this is the condensed structure given and I have to find the name, the structure, everything. First let's identify what it is. CH3 से कुछ नहीं पता चलता, इससे कुछ नहीं, but we can see a CO in the center. Center doesn't mean कि एकदम बीच में, end और पहले के कहीं भी हो सकता है ये CO. यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मगर end पे first point पे नहीं होगा और last के भी नहीं होगा. So we can see a CO in between which is only present in ketones, propanone, butanone, like that. Okay, so let's name it first. ये तो पता चल गया कि ये ketone है. Count the number of carbons, 3, 4, 5. तो इसका नाम कुछ ऐसा हो जाएगा, pent. Because it has 5 carbon atoms, the name will be pent. And because it is a ketone, it becomes pentanone. Okay, so the name here, rough name here is pentanone. Okay, let's draw the structure also. इसमें भी जो ये ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है. लाइक इसमें भी था ना, एसिड में डबल बॉन्ड O था, इधर भी डबल बॉन्ड O होता है. सो वील मेक 5 carbon atoms. Now it has 3 valencies. Okay, first let me put this single bond everywhere. Okay, now this will have 2, 2,
and CH3, CH2, CH. Now this let's complete. H, H, H. So we get this CH3. We write H and H here, which gives you CH2. We write H and H here, which gives you another CH2. And now you need a CO. On this carbon atom, you need a CO. So, not CEO. Not CEO. You know, I am the CEO. So, carbon and oxygen bond, this wala, ये वाला is made like this. अलग से चेन के अलग से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होता है. नाउ वी फिनिश दिस. नाउ वी लेफ्ट विद CH3. तो यहाँ पे हम 3 वैलेंसी है इसके पास, हम 3 हाइड्रोजन भी डाल देंगे फॉर दिस. सो वी हैव completed the structure of this pentanone. What is left? Molecular formula. We know that it is pent. Okay, so we write C5. Now, how many hydrogens should be there if we follow this rule? No. What is it? It's a ketone. So if I have 5 carbons, hydrogen कितने होने चाहिए? 10. So C5, H10 and O. This becomes the molecular formula. Let's verify. Hydrogen कितने गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 hydrogens and 1 oxygen. So this explains how it is a ketone. Achha, very interesting thing to note is just see, these two are different compounds, but their general formula is the same. Molecular formula is the same. CnH2nO. CnH2nO. Okay. So here in acid and esters also there is similarity. CnH2nO2. CnH2nO2. So both of them have same formula, same general formula. Though उनके structure एकदम अलग हैं, उनकी properties एकदम अलग हैं, वो अलग है, हम अलग हैं. So okay, enough talking. Now we'll take a final example. Okay. Okay. So let's see what is given to us. Okay. Suppose it is given okay. Now what is it? Which thing tells you which homologous series it is? So C2H5 से कुछ नहीं पता चलना. This COO in the middle tells us that it is an ester or acid. ये एक alkyl group है या दूसरा alkyl group है, right? तो दोनों जगह alkyl group कहाँ होते हैं? Ester में. And in the middle it has COO. तो हमें पता चल गया कि ये ester है. Okay. Now let's find the molecular formula. यहीं से how many carbon atoms are there? 2, 3, 4. So can I write it as C4? How many hydrogen atoms should be there? CnH2n. So we should have 8 hydrogen atoms and we should have O2. Now let's count how many hydrogens are there? 5 plus 3, 8. We don't have any more hydrogens, so H8, and these are the 2 oxygens which should be present. So this is also verified. Now structure will also be very easy. Just draw all the 4 carbon atoms. Right. First is C2H5. इतने सेक्शन में आपको C2H5 बनाना है. So 1, 2, 3, 4, 5. So C2H5 has been done. Okay. Then you have COO. Okay. So this thing is little. On this at least make a CO. Right. And now
you will have this other O, and here you will have a CH3. So this is how it completes the structure. The COO structure is like this: one oxygen double bonded and one oxygen with single bond with carbon. So we've drawn the structure of for any ester. Now naming. Naming is something which lot of times goes wrong. So you have to be very careful while naming an ester. क्या फ़र्क हो जाता है? ओके तो हम क्या करते हैं, इससे पहले को एक चीज़ मानते हैं. टिल हियर इट इज़ वन थिंग एंड टिल हियर इट इज़ वन थिंग. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. जो सेकेंड पार्ट होता है ना, उसको पहले लिखते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस. सेकेंड पार्ट इज रिटन फर्स्ट. व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? CH3OO. How many carbon atoms are there in the second part? 1. तो 1 की वजह से it will start as methyl. We will take the second part first and write it in the first form. Second part written in the first place. Now this first part will be written in the second place. क्रिस क्रॉस जैसा है. अब फर्स्ट पार्ट में कितने कार्बन है? 2 या 3? Yes, you have to count this also. So you have 3 carbon atoms. 3 will be called prop. Oh, I forgot to tell you this. This ends with 8. खाना वाला नहीं, प्रोपेनोएट. Okay, we can put one O here so that there is no confusion. Okay, so this is how you name you write the alkyl group first and then something weight, and especially second वाला part पहले बार लिखा जाता है, और ये जो पहला वाला part है which had 3 वो बाद में लिखा जाता है प्रोपेनोएट. O8 इज थिंग दैट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दिस. ओके, बीच में स्ट्रक्चर उसका COO का इस तरह हो सकता है अगर विजुअली आपको समझना है तो. ओके, आई थिंक वी हैव डन ऑल 4 ऑफ देम. सम एग्जांपल्स, सो वील स्टॉप हियर. आई थिंक एवरीथिंग इज डन. थैंक यू.